Hello everyone. Today we are going to discuss paper 3 of May-June 2022, and these are the instructions we have to follow. We will use the formula sheet also. Okay, let's move to the question number 1. Question number 1. Solve the equation this giving your answer correct to 2 decimal place. Now what we have to do is, the very first step is we can use the indices. 2 into 3 power 2x into 3 power minus 1 is equals to 4 power x into 4 power 1. Then further what we can do is we can simply rearrange it like this. 3 power 2x whole is divided by 3 is equals to 4 power x into 4. Now what we can do is we can further write it as 3 power 2x. We can cross multiply it, so this will be 4 into 4 power x into 3. Now the next step will be we can cancel out these two. So 3 power 2x is equals to 2 into 4 power x into 3. Now the next step will be we can write it as 3 power 2x into 6 is equals to 6 into 4 power x. Now what we can do further is we can take log on both sides. So take log on both sides. So this will be, as we know that the property of log is बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि लॉग की एक प्रॉपर्टी ये है कि अगर लेट सपोज लॉग ऑफ x टू द बेस a हो इज इक्वल्स टू y. इसको अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो दिस विल बी इक्वल्स टू a पावर y इज इक्वल्स टू x. So we will use this property. So this will be equals to, like we can write it as natural log of 3 power 2x is equals to natural log of 6 into 4 power x. Now as we can see here that यहाँ पे हम natural log ले रहे हैं. So natural log will be natural log of x means that log of x to the base e. तो इसको बिल्कुल वैसे ही कॉन्सेप्ट से अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें सो दिस विल बी इक्वल टू, सबसे पहली बात तो ये कि वी कैन यूज़ द प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग. सो लॉग की प्रॉपर्टीज़ में ये है कि वी विल राइट इट एज 2x को हम स्टार्ट में ले जाएंगे. सो दिस विल बी इक्वल टू 2x. So this will be equals to 2x into log of 3 is equals to, अब यहाँ पे दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, so we will add it. So log of 6 plus log of 4 power x. Now from here we can see that we can further write it as, अब यहाँ पे again हम पावर रूल लगा सकते हैं. So we can write it as 2 power x natural log of 3 minus x into natural log of 4 is equals to natural log of 6. अब यहाँ पे इस स्टेप पे मैंने दो काम किए हैं. एक तो ये है कि हमने लॉग जो पावर प्रॉपर्टी थी वो लगाई है और फिर इसको एज अ होल शिफ्ट कर दिया टू द अदर साइड. दैट इज व्हाई दिस विल बी इक्वल्स टू, नाउ यहाँ से what we can do is this should be log of 6. Now from here what we can do is we can take x as common.
So x will be equals to x into 2 natural log of 3 minus natural log of 4 is equals to natural log of 6. Now this will be further equals to x will be equals to natural log of 6 divided by 2 into natural log of 3 minus natural log of 4. So this will be the final answer. This will be the exact answer, but we can further simplify it on calculator. We can further simplify it on calculator. What we can do is we can use the calculator. So this will be natural log of 6 divided by 2 into natural log of 3 minus natural log of 4. So this will be equals to 2.201. So correct to two decimal place, the final answer will be x will be equal to 2.21. So this should be the final answer. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the next question. Question number 2. Now question number 2. Okay, this is question number 2. It is related to the binomial expansion. So expand this one. So let's see the formula first. This is the formula sheet and we can see that this is the binomial expansion. Now as we can see, now this is a very important point from the formula sheet, that we will use the first formula. We will use the first formula, this one, when the power or the value of x is a positive integer. Now here we can see the value of n is a negative integer. और वैसे भी पेपर 3 में हमने second formula ही use करना है. So we will use this one because here we can see that for negative values and for decimal values we will use the second formula. And for positive values जो कि paper 1 में है, this is related to paper 1. This one is related to paper 3. So we will use this formula. So a plus x whole power n. So first of all we can see here, this is a very important point, that यहाँ पे आपके पास 1 होना चाहिए. अगर 1 ना हो तो आपने इसको बनाना है. तो इस 2 को हमने 1 बनाना है. So what we can do is we can take 2 as common. So this will be equals to 2 into 1 minus x power minus 2 divided by 2 whole power negative 2. Now as we can see here, from here we can see this should be positive 2. This should be positive 2. Yes, this should be positive 2. Okay, now the next step is we can use the properties of indices. So 2 power minus 2 into 1 minus x square by 2 whole square, whole power negative 2. So you can see the formula 1 plus x. So here the x is x square by 2. So we can write it as 1 by 4. I will directly use the formula. So this will be 1. We can see from here 1 plus nx. Where is that? What is the value of n? Now here we can see that n is negative 2 and x is x. What will be the value of x? This is a very important point again, that here we can see कि आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है और आपके जो ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपके पास नेगेटिव वैल्यू है. सो इट मीन्स दैट द वैल्यू ऑफ x विल बी
minus x square by 2. So please keep this thing in your mind कि आपका जो ये 1 वाला फॉर्मूला है, और इनफैक्ट दोनों जो फॉर्मूले हैं इसमें आपके पास यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू होनी चाहिए, यहाँ पे पॉजिटिव साइन होना चाहिए. अगर पॉजिटिव नहीं है तो हम इसको खुद बनाएंगे. सो वी कैन राइट इट एज पॉजिटिव इंटू नेगेटिव 1 बाय एक्स स्क्वायर. सो दैट इज वाई एक्स की वैल्यू आपके पास माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2 है. सो दिस विल बी 1 प्लस एन एक्स. एन क्या है? नेगेटिव 2. एक्स क्या है? नेगेटिव एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस now this symbol is the factorial n into n minus 1. The next one is n into n minus 1 means that this will be minus 2 into n minus minus 2 into n minus 1. So n minus 1 is 3. So that is why this will be, we can write it as n minus 1 into what? Into x square. So into x square means minus x square by 2 whole square. Whole is divided by 2 factorial. Then the next one should be n into n minus 1 into n minus 2. So n into n minus 1 into n minus 2 into x cube. So x cube means that this should be minus x square by 2 whole cube divided by 3 factorial and so on. Now for this case we can see for this case we can see that in ascending order of x up to and included the term in x4, simplify the coefficient. So from here we can see that x4 आपके पास यहाँ पे आ जाता है. सो यहाँ से ऑनवर्ड आपको जाने की, ये वाला स्टेप आपको करने की ज़रूरत नहीं है, बट जस्ट टू शो हम इसको परफॉर्म करेंगे, मेंशन करेंगे, बट इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है. आपका ये जो 2 फैक्टोरियल वाला पार्ट है यहाँ तक ये ठीक है. ओके, नाउ इसको सिंप्लीफाई करें. सो दिस विल बी 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 2, ये एक्चुअल क्वेश्चन था. दिस विल बी इक्वल्स टू 1 बाय 4 1 प्लस, अब सेकंड में देखें तो कैंसिल आउट हो रहा है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 3 बाय 4 एक्स पावर 4. नाउ इसको अगर हम ओपन अप करें तो दिस विल बी 2 माइनस एक्स स्क्वायर होल पावर माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1 बाय 4 प्लस एक्स स्क्वायर बाय 4 प्लस 3 बाय 16 x power 4. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Okay, let's move on to the next question. Next part. State the set of values of x for which the expansion is valid. Now this is an important point, that for which the expansion is valid. So what does it mean? It means that, now as we can see in the question, 2 minus x square whole power minus 2, this was the question. So expansion is valid means that this minus 1 by 2 x square should be less than 1. Now we will use this concept, expansion is valid. Expansion is valid का मतलब यही है कि आप जब ये कॉमन लिया आपने तो माइनस 1 बाय 2 एक्स स्क्वेयर शुड बी लेस देन 1.
अब लेस देन 1 होगा तो तभी आपके पास पॉजिटिव आएंगी. So we can use it, we can use this point. So 1 by 2 x square should be less than 1 because ये नेगेटिव को पॉजिटिव कर दिया एब्सोल्यूट ने. So x square should be less than 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, and further we can write it as x will be equals to square root of 2. So square root of 2 means that we will have positive values. So x की हमने set of values बतानी है. So set of values should be negative square root of 2 से लेके positive square root of 2. So this will be the final answer. This should be the final answer. Now let's move on to the next question. Question number 3. Solve the equation 2 cot of 2x plus 3 cot of x is equals to 5. So we can write it as 2 divided by tan of 2x plus 3 divided by tan of x is equals to 5. So now we can use the formula here, tan of 2x. So tan of 2x, we can use the formula sheet, tan of 2x. Yes, this is the formula we have to use, tan of 2x. So tan of 2x will be equal to 2 tan of a into 1 minus tan square. So here we can see that we will have 1 by tan of 2a. So this will be equals to 1 minus tan square of a divided by 2 tan of a. So it means that this will be equals to 2 into 1 minus tan square of x divided by 2 tan of x plus 3 by tan of x is equals to 5. So we can, from here we can cancel out these two. So this will be equals to we can cancel out these two. So this will be equals to we can take the LCM again. So 1 minus tan square of x plus 3 divided by tan of x is equals to 5. So 4 minus tan square of x is equals to 5 tan of x. If we rearrange it, so this will be tan square of x plus 5 tan of x minus 4 is equals to 0. Now this is a quadratic equation. So we can find out the value of x as we can use the calculator here, 5 and the value 3. So a is 1, the coefficient of x square is 1. So 1, 5 and minus 4. So negative 4. So this will be equals to, the first value will be equals to 0.70156. So tan of x will be equals to 0.70156. And the other value will be, let's see the other value. The other value will be negative 5 points. So tan of x will be equals to negative 5.71. Now we can see the question again here. So they said solve the equation this for the interval this thing, for the interval this one. So solve means that we have to find the value of x. So here we can see that x will be equals to tan inverse of
0.70156, and here x will be equals to tan inverse of negative 5.71. Let's find out. So tan inverse of negative 5.70706170167016701 So this will be equal to minus 80.05. So x will be equals to minus 80.05. तो ये एक साइड की वैल्यू आ गई. सेकेंड केस में वी कैन सी 0.70156. So here this will be equal to 35.1. So x will be equals to 35.1. Now from here this is a very important point. Now we are going to discuss कि जब आपके ये आंसर्स आ जाएं तो उसके बाद आपने एक कंडीशन को चेक करना है जस्ट टू वेरीफाई योर आंसर्स कि आपकी आंसर्स जो है गिवन रेंज में है या नहीं. ये सारी वैल्यूज फाइंड करनी है. सो दिस विल बी CAST. Now for the first part we can see that 35.1. So as we can see that tan of x is positive here. So positive का मतलब ये है tan of x is positive here. So positive का मतलब ये है tan किन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है, इस क्वाड्रेंट में और इस क्वाड्रेंट में. इन दो क्वाड्रेंट्स में tan क्या है, पॉजिटिव है. तो यहाँ 35 बन रहा है और ये 35. बट ये 35 जो है वो 0 से 80 की रेंज से बाहर है. जो हमारी गिवन रेंज है x के लिए दैट इज फ्रॉम 0 to 180. तो इसलिए हम इसको काउंट नहीं करेंगे. तो ये आंसर वैलिड है आपका. सेकेंड वन इज tan की वैल्यू यहाँ पे देखें नेगेटिव है, नेगेटिव 5.71. तो नेगेटिव किस किस क्वाड्रेंट में, इन दो क्वाड्रेंट्स में, थर्ड सेकंड और फोर्थ में. तो नेगेटिव 80.05 है और यही यहाँ पे भी बनेगा. दिस विल बी अगेन 80.056. तो ये एंगल आपका रिक्वायर्ड है, ये एंगल रिक्वायर्ड नहीं है. तो इसीलिए इसको हम फर्दर क्या करेंगे, जस्ट टू फाइंड आउट दिस एंगल. ये मैं इसको 3 से शो कर देता हूँ. ये एंगल फाइंड करने के लिए अब हम क्या करेंगे, वी विल डू दीज स्टेप्स. ये आपके पास था. देखें ये एंगल फाइंड करने के लिए क्या होगा, ये एंगल हमें पता है और कंप्लीट एंगल ये फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे. सो 180 minus 80.05. So let's write it. 180 minus 80.05. So this will be equals to 99.95. So we can say that x will be equals to 99.9 degrees. तो एक आंसर आपके पास ये होगा 35.1 एंड द अदर आंसर विल बी दिस वन. मोस्टली डायरेक्टली इसको आपने आंसर कंसिडर नहीं करना, बल्कि फाइनल आपने आंसर तक जाना है. आई होप दैट द कॉन्सेप्ट इज क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 4. Question number 4. The variable x and y satisfies the differential equation and y is equals to 2 and x is equals to 0. Solve the differential equation obtaining a simplified expression for y in terms of x. Now ये differential equations का questions है. तो first of all we have to separate the variables. So this will be equals to 1 by y dy is equals to x by 1 plus
x square dx. Now take integral on both sides. So this portion will be equals to integrate, take integral on both sides. So this portion will be equals to natural log of y is equals to, now how we can integrate this one? So we can use substitution, use substitution, and we can substitute as let u is equals to 1 plus x square. So du will be equals to 2x dx, and here we have the x only, so we can write it as du by 2 is equals to x dx. Now न्यूमरेटर को हम किस तरह लिख सकते हैं? du by 2 के इक्वल है न्यूमरेटर. This will be equals to du by 2 और जो ये पोर्शन है 1 बाई यू, 1 बाई 2 तो कांस्टेंट है, इसको हम बाय लिख लेंगे. नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू 1 by 2 natural log of u, and further we can write it as, or we cannot ignore the c, so further we can write it as natural log of y is equals to 1 by 2 natural log of 1 plus x square plus c. अब यहाँ पे हम अगर वैल्यूज देखें, x की वैल्यू 0 एंड y की इज 2. For x is equals to 0, x is equals to 0 and y is equals to 2. Just put the values here. So this will be natural log of 2 is equals to 1 by 2 natural log of 1 plus 0 plus c. So from here we can find out the value of c. Natural log of natural log of 2 is equals to, बल्कि इसको इस साइड पे, इसको इधर नहीं ला सकते, खैर we can write it as natural log of 1 power natural log of 1 power 1 by 2 plus c. So this will be equals to natural log of 2 minus natural log of 1 is equals to c. So from here we can see natural log of 2 by 1 is equals to c, and the final answer for c will be equals to natural log of 2. So what will be the equation then? Now we can use the first one, this one, and just put the value here. So this will be equals to natural log of y is equals to 1 by 2 natural log of 1 plus x square plus natural log of 2. So here the question was solve the differential equation and simplified in terms of y in terms of x. ये 7 marks का question है. So what we can do is next step is कि अब हम इसको दोबारा log की प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे, एंड सबसे पहले तो हम पावर रूल को यूज करें. सो दिस विल बी नेचुरल लॉग ऑफ y इज इक्वल्स टू natural log of 1 plus x square whole power 1 by 2 plus natural log of 2. Then we can write it as we can see कि प्लस है आपके पास. सो प्लस मीन्स कि हमने इसको मल्टीप्लाई की फॉर्म में लिखना है. सो natural log of y is equals to natural log of 2 into 1 plus x square whole power 1 by 2. So up now we can see from, we can cancel out these two natural logs. So y will be equals to 2 into 1 plus x square whole power 1 by 2.
and now we can replace it with y is equals to 2 square root of 1 plus x square, and this should be the final answer. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the next question. Question number 5. The polynomial ax cube minus 10x square plus bx plus 8, where a and b are constant. So it is given that x minus 2 is a factor of both p and p dash of x. What does it mean? This means that this is the first derivative of p of x. Now we will use this hint that the first point is x minus 2 is a factor. So x minus 2 is a factor means that p of 2 should be equals to 0. Now we will use it. Now as we can see that p of x is equals to ax square plus bx plus ax cube minus 10 x square plus bx plus 8. Now p of 2 will be equals to a into 2 cube minus 10 into 2 square plus 2b plus 8. Now 0 is equals to 8a minus 40 plus 2b plus 8. So this will be equals to 8a plus 2b minus 32 is equals to 0. Divide 2. So this will be equals to 4a minus plus b is equals to 16. So this will be equation 1. Now the next step was that both these two are the factors. So सबसे पहले तो फर्स्ट डेरिवेटिव हम इसका फाइंड करेंगे. So if we directly find out the value, let me change the color first. If we directly find out the value, so p dash of x, first derivative of p of x will be equals to, now इसका हम derivative लें, so this will be equals to 3ax square minus 20x plus b, और लास्ट तो डेरिवेटिव 0 हो गया. सो दिस इज अ फैक्टर. सो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट डेरिवेटिव विल बी इक्वल्स टू 0. सो फर्स्ट डेरिवेटिव p of 2, दिस इज अ फैक्टर. So that is why we'll use x equals to 2 जो हम previous find किया है. This should be equals to 0. So p dash of 2 will be equals to 3a 2 square minus 20 into 2 plus b. So 0 is equals to 4 3 12. So 12a minus 40 plus b, and this will be equals to 12a plus b is equals to 40. Question number 2. Now we have two equations and two unknown variables, so we can write it as, let me change the color first again. So we can write it as 4a plus equation 2 minus equation 1 अगर करें, so equation 2 minus equation 1. So this will be equals to 12a plus b is equals to 40, और equation 1 आपके पास क्या थी, 4a plus b is equals to 16. So इनको अगर हम subtract करें, change the signs, cancel out. So this will be 8a is equals to 24. So a will be equals to 3.
Now just put the value of a in any of the equation. So this will be, let's suppose हम second में ही put करें, so this will be equals to 12 into 3 plus b is equals to 40. So b will be equals to 40 minus 36. So b will be equals to 4. So a is 3 and b is 4. So this will be the final answer. I hope that the concept is clear. Now let's move on to the next part, second part, part B. When a and b have these values, factorize p of x completely. Now first of all, as we can see that p of x is equals to 3x square minus 10x, 3x cube minus 10x square plus 4x plus 8. Now let's see this again. Let's verify this one, that the value of a is, so this will be 3x cube minus 10x square plus 4x, because b की वैल्यू 4 है, plus 8. yes, p of x की वैल्यू यही है आपके पास. Now let's see, ये हमने वैल्यूज पुट कर लिए हैं. Now we will factorize it. Okay, now factorize. Now how we can factorize this one? As we can see that one of the root is x minus 2. So x minus 2 is, if x minus 2 is the root, so it means that this will be the solution. This will be the solution. So now we can use synthetic division. Now synthetic division का कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये कभी कभी आप, ये काफ़ी इजी भी है और काफ़ी आपको हेल्प आउट भी करेगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने का. अब सिंथेटिक डिवीजन का प्रोसेस क्या है, और ये मोस्टली स्टूडेंट्स इसको यहाँ इग्नोर करते हैं. सो सिंथेटिक डिवीजन को थोड़ा सा सीख लें, ये आपको काफ़ी क्वेश्चंस में हेल्प करेगा. नाउ सिंथेटिक डिवीजन है क्या आपके पास? सिंथेटिक डिवीजन ये है कि आपने सिर्फ कोफिशिएंट्स को यूज़ करना है और सीक्वेंस के साथ यूज़ करना है. लाइक यहाँ पे अगर आप देखें 3x क्यूब मीन्स कोफिशिएंट ऑफ दिस इज 3, देन माइनस 10, देन प्लस 4 एंड देन 8. एक बात याद रखें कि आपने एक सीक्वेंस के साथ जाना है, लाइक x क्यूब का सीक्वेंस, फिर x स्क्वायर, फिर x का, और फिर x पावर 0 का. तो अगर इसमें से कोई टर्म आपके पास मिसिंग हो तो उस केस में आपने क्या करना है, आपने जो आपके पास मिसिंग टर्म है उसका कोफिशिएंट को 0 लिखना है. ओके, नाउ 2 आपके पास क्या है, इसका फैक्टर है. तो हम यहाँ 2 से स्टार्ट करेंगे. द वेरी फर्स्ट स्टेप इज, जो भी फर्स्ट डिजिट होगा उसको एज इट इज नीचे रखेंगे 3, एंड देन आपने क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है. 2 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 2 3 6. अब इनको सब्ट्रैक्ट करें तो दिस विल बी, ऐड करें so -4. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज दैट यू हैव टू मल्टीप्लाई 2 with -4. so 2 into -4 is -8. इन दोनों को ऐड करें और so this will be -4. अगेन व्हाट वी हैव टू डू, कि इसको आपने 2 को मल्टीप्लाई करना है, 2 को मल्टीप्लाई करना है विद दिस वन. So 2 into -4, this will be equals to -8. तो इसको आप ऐड करें, सो रिमाइंडर आपका 0 आ गया. यहाँ पे जो भी चीज़ होगी वो रिमाइंडर होगा. तो इसका मतलब ये है, सिंथेटिक डिवीजन से बेसिकली हमने क्या किया, इसको हमने फाइंड कर लिया कि 3x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4. तो एक फैक्टर ये है आ गया आपके पास, और सेकंड फैक्टर जो था, फर्स्ट जो फैक्टर था वो x माइनस 2 था आपके पास. अब इसको तो फर्दर फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं है. तो p ऑफ x को आप अगर फैक्टर्स की फॉर्म में लिखें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x माइनस 2 इनटू. अब इसके अगर आप फैक्टर्स निकालें या रूट्स निकालें, सो वी कैन यूज द कैलकुलेटर.
A is 3, B is -4 and C is -4. तो एक फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, +4, और दूसरा फैक्टर आपके पास क्या आ रहा है, ओ सॉरी, एक फैक्टर आपके पास -2 और सेकंड फैक्टर आपके पास, सो x -2 आ रहा है आपके पास और x +2/3। तो फर्दर अगर आप इसमें एलसीएम लें, सो दिस विल बी इक्वल्स टू x -2, इसको आप होल स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, और इसको 3x +2. Now this will be the final answer. I hope that the concept is clear. इसमें थोड़ा सा अगर हम इसको देखें, ये जो सेकंड पार्ट को हमने सॉल्व किया है, इसको अगर आप देखें तो यहाँ से हमारे आंसर दो आए थे। एक आंसर आपके पास आया था x = 2, एक था आपके पास x = -2/3। तो इसको रीअरेंज किया था हमने, x -2 = 0, यहाँ से x +2/3 = 0, और यहाँ से अगर हम एलसीएम लें सो 3x + 2 = 0, क्रॉस मल्टीप्लाई करें सो 3x + 2 = 0 और एक ये, तो इसलिए हमारे दो फैक्टर्स आ गए, एक x -2 और एक 3x + 2, यही दो फैक्टर आए थे। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। आज की क्लास में हमने 5 क्वेश्चंस को डिस्कस किया था इस पेपर के, पेपर 31 मई जून 2022। ये क्वेश्चन नंबर 1 था, देन क्वेश्चन नंबर 2 बायनोमियल एक्सपेंशन से था, देन ट्रिग्नोमेट्री से था, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस का क्वेश्चन था, और आखिर में आपके पास ये पॉलिनोमियल्स का क्वेश्चन था, जिसमें हमने सिंथेटिक डिवीजन को भी टच किया है। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन, और नेक्स्ट क्लास में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू।